Hello, good afternoon everyone. I hope you are fine. Now again we are here for our next class of Unit 7 Thermodynamics. Yes beta, in the yesterday we started last class their thermodynamics. So in last class we discussed what is thermodynamics. Okay, what are the use of the thermodynamics in our daily life. कि daily life में हम thermodynamics का कहाँ use कर रहे हैं. So every day we are using beta that some rules of the thermodynamics during the boiling of the water, during the boiling of the milk, then cooking food, there also bathing also, then everywhere we are using their thermodynamics. की heat transfer होती है from one to another body, there also thermodynamics. It is not transferring, volume is changing there, pressure changing there. So everywhere their thermodynamics is present in our daily life. Okay, so we discussed already beta about the thermodynamics, variables of the thermodynamics, pressure, volume, temperature, and how we can write each all variable in form of the equation that we will call it equation of the state PV equal to nRT. After that we discussed there four type of the process of the thermodynamics: adiabatic, isochoric, isobaric, and your isothermal. Four type of the processes are take place in your thermodynamics. Okay, so after this one here internal we will discuss beta next one topic your internal energy, heat, and your work done. Okay, internal energy, heat, and work done. So first one, internal energy. What is internal energy? That is a total energy randomly as particles, molecules are moving here and there, then energy between them due to motion of these particles will be at their internal energy. We can say energy contained within the system associated with the random motion of the particles. जो particle बेटा present है हमारे system के अंदर, उनकी motion की वजह से with their potential energy of the molecule due to their orientation. ओके उनके क्या है ओरिएंटेशन मोशन की वजह से जो हमारी एनर्जी होती है, उनकी पोटेंशियल जो एनर्जी होती है, दैट इज नोन एज द इंटरनल एनर्जी, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू लेटर से. दिस एनर्जी ड्यू टू द random motion include the translatory, rotational, and vibrational. Motion are having your three type. Now we discussed already in your second unit: translatory motion, your rotational motion, and your vibrational motion. Okay, same here, particle also can be moved in our system in different type of the motion, can be translatory, can be rotational, can be vibrational motion. Okay, so total energy due to these randomly motion of that particles in our system is known as the internal energy. Internal energy we can say that is a sum of your heat plus your work done. Okay, Q is our heat and W is a work done. W is वर्क डन. क्लियर? तो हीट क्या, आपकी जो इंटरनल एनर्जी वो क्या होती है? सम ऑफ द हीट, जो हीट होती है हमारे सिस्टम के अंदर पर प्लस वर्क डन, जितना काम किया जाता है, दैट टोटल विल बी कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. नेक्स्ट आवर हीट, एज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, देन वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इंक्रीज. तो वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल और एटम क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है एज वी आर इंक्रीजिंग आवर टेम्परेचर. सो दीज वाइब्रेशंस आर देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट. दिस वन, द मेजर ऑफ द एनर्जी विद विच द मॉलिक्यूल वाइब्रेट इन द सिस्टम इज नोन एज द हीट stored in our object. ये क्या कहता है कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए जा रहे हैं, देन इंक्रीज वी विल इंक्रीज दिस टेम्परेचर, देन वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी इंक्रीज ड्यू टू रैंडमली मोशन. पार्टिकल जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हैं? रैंडमली मूव कर रहे हैं हियर एंड देयर. तो बेटा यस्टरडे आल्सो आई टोल्ड यू, पार्टिकल मूव करते हैं, इधर उधर घूमेंगे तो क्या हो जाता है? उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, उनके अंदर क्या हो जाती है? हीट क्रिएट हो जाती है. सो दिस वन मेजरमेंट, मेजर ऑफ द एनर्जी विद विच मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटिंग इन द सिस्टम, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? हीट स्टोर्ड इन दैट ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी हीट स्टोर की गई है. Next here, work. What is work? Work is that associated with the transfer of the heat. कितनी heat transfer की जा रही है? That is here work only. So work we are explaining in a two form: work by the system and work on the system.
ओके, कि अगर हम ये वाला सिस्टम, फॉर एग्जांपल दिस वन योर सिस्टम इज देयर, इनसाइड दिस वन हैविंग अ पिस्टन एंड देयर फोर्स वी आर अप्लाइंग ऑन इट। फोर्स क्या है, अगर ये सिस्टम अंदर की गैस है जिसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, देन वी विल कॉल इट सिस्टम एंड सराउंडिंग पार्ट विल बी देयर आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। तो इसके अंदर जो भी हमने गैस फिल कर रखी, दैट इज आवर सिस्टम। तो गैस पुश कर रही है, इसको फोर्स अप्लाई कर रही है, देन फोर्स अप्लाइड बाय द gas in outward direction, then your volume will be increased. At volume will be increased, then work done will be positive. Work can be positive, can be negative. So work by the system, then positive. Work on the system, then it will be negative. बेटा केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं उससे अपोजिट हम इसके अंदर साइन लेते हैं। then work by the system, वर्क मतलब गैस क्या है, इसके ऊपर वर्क कर रही है, सिस्टम वर्क कर रहा है, देन एरिया क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब एरिया के साथ कैसे डिपेंड करता है वर्क डन, वी विल डू इट। ओके, सो सपोज अ पिस्टन कंटेन अ गैस, इस पिस्टन के अंदर क्या गैस भरी हुई, तब पिस्टन मूव आउटवर्ड, जैसे ये पिस्टन क्या है बाहर की तरफ जा रहा है, देन वी कैन से वर्क इज डन बाय द गैस। गैस क्या कर रही है, इसके ऊपर वर्क कर रही है, तो इट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो गैस वर्क करेगी बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इनिशियल पोजीशन ये, जैसे इसने वर्क किया, लेट इट विल बी शिफ्ट हियर, तो इतना शिफ्ट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम विल बी देयर, एंड दिस चेंज इन वॉल्यूम इन अ increasing order, that's why your work done also are positive. Okay, why it is positive I will tell. Similarly if it is move inward, जैसे अंदर की तरफ वर्क करेगा, मतलब अब क्या कर रहा है, सराउंडिंग वर्क कर रहा है, इसके ऊपर पिस्टन क्या जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, अगेन वॉल्यूम विल बी चेंज, बट नाउ दिस टाइम पिस्टन विल गो इनसाइड, देन वॉल्यूम विल डिक्रीज देयर। वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो वर्क डन ऑन द गैस एंड इट विल बी नेगेटिव। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो आपका क्या होगा, नेगेटिव। अगर वर्क बाय द सिस्टम करेंगे देन it will be a positive only. We discussed already in our mechanics. तो हमारे अंदर क्या था, मैकेनिक्स के अंदर वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। if both are acting in same direction then your force into displacement we can write there. Okay, so as we are applying their force, then pressure will be exert. So in form of the pressure we know about this one, pressure is equal to force। pressure के फॉर्म में क्या होता है, pressure equal to force per unit area. So here we can write there F equal to pressure into area we can write here. So here force we can write there pressure area into your displacement. Clear? So from here we can write there A into ds, area into your one side of this one system, then we can write there change in the volume. Okay, so this one you are beta small change in the work done, that is equal to your P dV. Okay, dV means change in the volume, here this one here change in volume। अगर ये वॉल्यूम के अंदर जो चेंज हो रहा है, अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम, then work done will be positive. So work done here can be positive. I told you ना, work done can be positive, work done can be negative. तो पॉजिटिव नेगेटिव कब रहेंगे वर्क डन आपके, here we can write there work done positive when your work done equal to your PdV, small work done we can write there PdV. Okay, and work done can be your negative. So positive we can write there work done by the system. सिस्टम हम किसको एज्यूम कर रहे हैं, गैस। ओके, गैस पिस्टन पे वर्क करेगी तो क्या करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। क्या करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वर्क डन क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। ओके, इफ नेगेटिव मींस योर वर्क डन बाय द सराउंडिंग, बाय द सराउंडिंग। इसको दूसरी फॉर्म में भी बोल सकते हैं बेटा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर हम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब पिस्टन को सराउंडिंग ने वर्क किया, पिस्टन के ऊपर सिस्टम के ऊपर वर्क किया, तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। इन दिस केस वॉल्यूम विल बी डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज। ये क्या कहता है कि चेंज इन वॉल्यूम, जो चेंज इन वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो गया तो डिक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगा, वर्क डन आपका नेगेटिव हो जाएगा। So we can say work done can be positive, can be negative. Positive work done by the system, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अगर वर्क डन नेगेटिव कब हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और वर्क डन बाय द सिस्टम,
by the surrounding and work done on the system. तो ये दो केस है बेटा. Keep in mind then when work done will be positive and when work done will be negative. This one will have to solve any questions related to our work done. I hope you understood beta when work done will be positive or negative. So this one your work done by using your graphical approach. ग्राफ की हेल्प से हम वर्क डन कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था बेटा. ग्राफ की हेल्प से वर्क डन हम फाइंड कर सकते हैं. फिर ग्राफ इज गिवन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देन इट विल शो दैट एरिया अंडर द कर्व इन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज नोन एज अ वर्क डन. ओके, सेम हियर ग्राफिकल अप्रोच सजेस्ट दैट वर्क डन इज योर एरिया अंडर द इन पीवी ग्राफ. हम यहाँ पे क्या रीड कर रहे हैं? प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ. पीवी ग्राफ का क्या मीनिंग है? प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ. मैकेनिक्स में हम यूज करते हैं बेटा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. क्लियर? बट इन योर थर्मोडायनेमिक्स वी विल रीड देयर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ. Told na how their relation between their pressure volume for work done. Work done in mechanics we can write their force displacement, then your force we can write their pressure into area. So area into displacement we can write their change in volume. तो ये क्या बताता है? Small change in the work done equal to your multiple of the pressure and change in volume. This one your change in the volume. This one change in volume. Clear? तो so find out this one to using their graph. अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ गिवन है, तो अगर आपको वर्क डन फाइंड करना है, so in your PV graph then work done will be equal to beta area under the curve in पीवी ग्राफ. कोई भी पीवी ग्राफ गिवन हो, उसके अंदर जो भी कर्व मिलेगी, उस कर्व के नीचे का जो एरिया होगा वो क्या डिफाइन करेगा? आपको वर्क डन देगा. फॉर एग्जांपल दिस कर्व इज गिवन इन आवर पिक्चर. तो इसके नीचे का ये एरिया है, ये एरिया आप फाइंड करोगे बेटा. दिस वन एरिया इज इक्वल टू वर्क डन इन योर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ. ओके, हियर प्रेशर अगेन वॉल्यूम अगेन नेक्स्ट ग्राफ इज गिवन. हियर कर्व इज दिस वन. ये आपको कर्व गिवन है. ओके, स्टेट ए एंड बी. इस कर्व के नीचे का अगर आप एरिया निकाल दोगे तो ये एरिया हमें किसके इक्वल होगा? वर्क डन के इक्वल. ओके, सो हियर area under the curve in your PV graph that is equal to work done. I hope you can do beta. If any graph will be given of the pressure volume, then you have to find out work done, then find their area. Any curve is given, then under that curve find their area. That area will be give us our work done. Okay, if your volume is increasing during that case, then it will be expansive. Work done is positive. Okay, then expansion is there. Then if your volume is decreasing, then work done will be negative. We can say there compression is there. Okay, now next here PV diagram for your isothermal, adiabatic, isochoric, isobaric. We discussed already beta 4 type of the process. Here isothermal process discussed, adiabatic process we have discussed already. नेक्स्ट ईयर आइसोकोरिक, नेक्स्ट ईयर आइसोबारिक. ये 4 टाइप की प्रोसेस हमने डिस्कस की थी बेटा. इसके अंदर क्या होता है? आइसोथर्मल. आइसोथर्मल मींस प्रेशर विल बी टेम्परेचर विल बी रिमेन कांस्टेंट. वी कैन राइट देयर चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 0. दैट मींस योर टेम्परेचर इज कांस्टेंट. टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा बेटा इसके अंदर, आइसोथर्मल के अंदर. Now, so PV graph is there. Then out of this PV graph, there 4 curve are there. Yes ना? इसके अंदर 4 curve given है बेटा. एक isobar, this one your standing curve, isochore, this one your adiabatic, then this one your isothermal. So what is the difference between them? In your PV graph में कहता है बेटा, PV graph के अंदर कि टेम्परेचर अगर constant रहेगा, as we know about this one, PV equal to your nRT. For 1 mole, we are taking this one. For the 1 mole we can say this one n constant, 1 r constant, t is constant. So we can write there PV is equal to constant.
क्लियर, ये कांस्टेंट होगा. सो हियर वी कैन राइट देयर P इज इनवर्सली टू दी वॉल्यूम. तो P V के ग्राफ में P क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम. तो ये तो आपका रहेगा इन स्टेट. नो दिस वन. सो आउट ऑफ दीज विल बी वन. हियर दिस वन विल बी आइसोथर्मल, दिस वन विल बी adiabatic. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू slope? Here this one slope is a more steeper as compared to the isothermal. बेटा ग्राफ के अंदर, पीवी ग्राफ के अंदर क्या रहता है कि जो आपका आइडियाबैटिक की कर्व होती है वो ज्यादा स्टीफर होती है. ज्यादा स्टीफर का मीनिंग क्या है कि सीधा सा होती है, ज्यादा ऐसी प्लेटी नहीं होती. दैट इट विल बी स्टीफर ओनली एज कंपेयर टू आइसोथर्मल. Okay, what is the reason of this one? I will tell you later on solving this one mathematically. Then here isothermal we can say this one P is inversely proportional to this one. So this one curve is indicating that is isothermal curve. Okay, here this one here isothermal curve, this one curve is here isothermal curve. Next your adiabatic curve. Adiabatic means heat will be remain constant. हीट का एक्सचेंज नहीं होता. सो हेयर ऑल्सो पीवी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दिस वन कर्व विल शो योर आइडियाबैटिक कर्व. नेक्स्ट वन योर आइसोकोरिक. आइसोकोरिक मींस चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू योर जीरो ओनली. वी कैन से वॉल्यूम विल बी रिमेन कांस्टेंट. Volume will be remain constant. So in your PV we can say there beta volume will be remain constant. Then in that case which one will show their isochoric process? If volume will be constant that means volume is not varying. See this one curve. इस कर्व के अंदर क्या कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इधर जा रहे हैं तो ओके. इसके अंदर भी क्या कर रहा है, वॉल्यूम वेरी कर रहा है. बट फॉर दिस वन स्ट्रेट कर्व वॉल्यूम विल बी रिमेन कांस्टेंट. जो इधर वैल्यू है इसकी वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है वॉल्यूम की. दैट्स व्हाई दिस वन स्ट्रेट curve in your PV graph will show your isochoric curve. Okay, so if you want to find out work done, beta work done क्या होता है आपका PdV, change in volume equal to zero. Volume equal to zero. So work done in your isochoric always will be जीरो. वर्क डन क्या कहता है आपका, आइसोकोरिक के अंदर हमेशा जीरो रहता है क्योंकि वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम ही नहीं होता. तो वो आपका क्या होगा, जीरो होगा. जीरो होगा तो आपका वर्क डन क्या रहेगा, जीरो ओनली. नाउ आइसोबारिक. आइसोबारिक क्या कहता है कि दैट इज चेंज इन प्रेशर इक्वल टू योर जीरो. प्रेशर विल बी रिमेन कांस्टेंट ओनली. क्लियर, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम विल बी चेंज. सो दिस वन कर्व विल शो योर आइसोबारिक. प्रेशर विल रिमेन हियर ओनली कांस्टेंट, volume is changing from here to that side. So like this one curve will show your isobaric curve in your PV graph. So here work done we can write there W equal to your P dV. This one will be equal to your work done in your isobaric curve. ओके तो इन दोनों के अंदर हमने क्या देखा बेटा, कर्व भी देखे और वर्क डन भी निकला. कितना वर्क डन होता है, ये आपका वर्क डन होता है. बट फॉर आइसोथर्मल एंड आइडियाबैटिक वर्क डन वी विल फाइंड by using their equation of these terms. Now next your adiabatic curve. आइडियाबैटिक कर्व. ओके, अभी आपने देखा आइडियाबैटिक ग्राफ. ग्राफ के अंदर मैंने बताया कि आइडियाबैटिक जो कर्व होती है दैट इज मोर स्टीफर एज कंपेयर टू दी आइसोथर्मल. ओके, व्हाई इट इज दिस वन? हियर वी विल डिस्कस बेटा थ्री रिलेशन फॉर द आइडियाबैटिक कर्व. देन वी नो अबाउट दिस वन PV इक्वल टू योर nRT. yes or no? आइडियल गैस इक्वेशन इज दिस वन PV इक्वल टू nRT. तो इसके अंदर क्या होता है, आइसोथर्मल के अंदर तो क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है. सो इन योर आइसोथर्मल, इन आइसोथर्मल प्रोसेस नाउ हियर PV इज इक्वल टू योर कांस्टेंट ओनली. ये प्रोसेस क्या होती है, कांस्टेंट होती है. बट आइडियाबैटिक में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है दैट इज इक्वल टू योर गामा. ओके, और ये गामा क्या होता है, गामा इज इक्वल टू योर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम. वी कैन से Cp by Cv इक्वल टू योर गामा. ओके, सो दिस वन गामा इक्वल टू योर स्पेसिफिक, क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. वी कैन राइट देयर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट pressure. Okay, then Cv equal to your specific heat at constant volume. Okay, this one Cv is equal to your specific heat at
constant specific heat at constant volume. Here Cv is equal to specific heat at constant pressure, this one at the constant volume. So this one your gamma. तो ये एक्स्ट्रा फैक्टर बेटा आइडियाबैटिक के केस के अंदर आ जाता है, that is equal to Pv gamma equal to your constant only. So how we can write there this one for adiabatic beta, for adiabatic we are writing there Pv gamma is equal to constant, we can write this constant equal to your K only in your Pv curve. Okay, so this one we can derive by using this one, as we know Pv equal to your RT. Okay, so from here need the relation between T and V. हाँ किसके relation चाहिए बेटा, T और V के relation चाहिए. So from here we can write there P is equal to, in that relation we can write here P equal to K by V gamma. Okay, V gamma, sorry, here will be gamma. We can write like this one. Okay, then put value of P here, put value of P, this one your first equation, in equation first, then here we can write there K V gamma V equal to your RT. So here we can write there K, then V we can take upper side, so here we can write there 1 minus gamma equal to your RT. Understood? So here we are writing beta need of this one, then take this on this side, then K by R, K and R both are constant, then this one we can write there V, we will take this one side, then it will be 1 minus gamma. So from here as we will take this one upper side, then sign will be changed there. अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, and this one complete term is equal to constant only. So here this one constant we can write there K only, then T, and this one take upper side, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, gamma minus 1. Okay, so this is the relation for the temperature and volume for the adiabatic change. Okay, this is the case for your pressure and volume for the adiabatic change, and this is the equation for the temperature and volume for your adiabatic change. Now next here this one T, pressure and temperature. Pressure and temperature. Now next here pressure and temperature. Now here how we can find with the temperature and pressure relation, then here we know about this one, as we know PV gamma equal to your constant. constant को हम क्या कर सकते हैं, K पुट कर सकते हैं. अब हम किसके लिए relation find कर रहे हैं बेटा, here relation we are finding there pressure and temperature. इसके लिए हम find कर रहे हैं pressure और temperature के लिए. अगर इसके अंदर अगर हम pressure और temperature अगर find करें, volume की value अगर put कर दें, then our relation will be there. Yes or no? अब हमें पता है adiabatic के लिए क्या चाहिए, क्या equation होती है, PV gamma equal to your constant only. So here we are putting this one. Wait beta. PV equal to your RT. Okay. Then here need relation between your pressure and temperature for find relation between pressure and temperature for adiabatic change. किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, for adiabatic change. Adiabatic change. Here adiabatic change के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फाइंड करते हैं प्रेशर और टेम्परेचर. प्रेशर और टेम्परेचर मीन्स वॉल्यूम वी हैव टू रिमूव है. फ्रॉम देयर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द V and take output value here. Now here we can write there PV equal to your gamma equal to K. Then here V gamma we can write there K by P only. Okay. So here we can write this one. Then put value of this one here. Then
see beta, here this one P, wait क्या क्या, then put in equation first, okay, then here P V equal to your RT, then from here we will write there P by T equal to R by V, so P minus 1, then here we can write there R by V only, okay, then from here R gamma we can write there, this one take this side, wait beta, then gamma should be there na, PV gamma equal to K, then we have to remove this volume, P gamma, then volume will be take out by this one, then from here volume we will find beta, then here relation will be there our come out, then P 1 minus gamma T gamma, then R this one, K only constant will be there, here constant K will be there after solving this one, okay, so from here we will take out value of V, then put value of V here, put value of V, okay, after value putting, then this one relation will be there, that is your adiabatic change for your pressure volume, temperature volume, and your pressure temperature for our adiabatic change. These are the three relations for your adiabatic change. Now next your slope of isothermal and adiabatic curve. अभी बताया था मैंने, that is adiabatic curve will be more steeper as compared to isothermal. How we can find their slope? Now as we know, isothermal curve is equal to PV equal to our RT for 1 gram of mole, means N equal to we are taking there 1. We can write there PV equal to RT. Okay, so for this one here, for isothermal change, we can write there temperature is equal to constant. Temperature क्या रहता है आपका? Constant रहता है. So here we can write there PV is equal to your constant. RB क्या constant है, TB क्या हो गया constant होगा, so here left PB equal to K constant only. Now for differentiating both side, अब क्या कर देंगे हम, differentiate कर देंगे on both side, दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर देंगे, so here we can write there PdV plus your volume dP, and here constant is there, constant differentiation will be equal to 0 only, so here we can write there PdV, take this one this side, take this one this side, then here we can write V dP equal to your minus PdV, dP equal to your dV minus P by V. Change in pressure to the change in volume equal to your pressure by volume, that will be negative. So in your PV graph beta, that is the slope of any graph. Slope क्या होता है, change along the y axis to the change along the x axis. So in your temperature PV pressure volume graph, so slope of this one graph change along your y axis to the change along your x axis, that is equal to your negative slope will be there, and this one your minus PV. इस तरीके से isothermal curve in our PV graph. Okay, now for adiabatic curve we will find this one. How we can find for adiabatic change, how we can write this one, adiabatic change, we can write there PV gamma equal to your constant. Okay, here another factor, extra factor is there,
that extra factor your gamma, and that is your change along your ratio of specific heat to at the constant pressure to the volume. We discussed now already. Gamma is equal to your Cp by Cv, specific heat at constant pressure to the constant volume. So PV gamma equal to constant. Now here taking differentiation to for find out their slope. अब इसके अंदर भी क्या है, PV ग्राफ का स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग on both sides. So here we can write there P, then differentiation power will come forward, then here left one subtract from this one power, then here dV, here plus V gamma as it is, dP will be there, and constant differentiation will be equal to 0 only. So this one we are taking this side, then here left V gamma dP equal to here minus P gamma V gamma minus 1 dV. This came. Now here we have to find out slope of the PV graph, means change along y to x axis. dP by dV we have to find out, dP, and this one dV we will take this side. So here left minus P gamma V gamma minus 1, this इसको इधर लेके जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, V gamma. Clear? So V gamma is here, then gamma minus 1 is there, then from here gamma to gamma cancel out, here left here minus P gamma. तो इधर बेटा गामा से गामा की पावर कैंसिल होगी तो इधर क्या बचेगा, V minus 1 बचेगा. ओके, सो माइनस 1 को हम क्या रख सकते हैं, पावर अगर माइनस 1 है देन वी कैन राइट इट डाउन साइड. सो हियर लेफ्ट हियर dP by dV, here dP by dV क्या आ गया आपका, चेंज along your pressure to the volume, that is equal to minus as it is, gamma is there P by V pressure volume. ठीक, तो हमने क्या देखा कि आइडियाबैटिक के अंदर जो रेशियो आ रहा है, सॉरी आइसोथर्मल के अंदर जो चेंज आ रहा है, आइसोथर्मल चेंज, वी कैन फाइंड देयर स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ. पीवी ग्राफ का स्लोप आइसोथर्मल के अंदर क्या आया, चेंज अलोंग योर y एक्सिस टू द चेंज अलोंग योर x एक्सिस माइनस dP by dV minus P by V. Yes na, this one came. See here for adiabatic beta we solved dP by dV, then here came minus P by V. Okay, so this one here slope in your PV graph, this one came. Now here written, now for your isothermal adiabatic, isothermal के लिए लिख चुके, आइडियाबैटिक चेंज, आइडियाबैटिक कर्व के लिए हम क्या फाइंड कर रहे हैं, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ. दैट इक्वेशन इज केम आउट dP by dV, अभी सोल्व की थी हमने, dP by dV इज इक्वल टू योर माइनस गामा P by V, minus gamma P by V. Okay, so here this one here first one isothermal, this one second one. So using these both slope then we will find their graph. So graph how we can make their beta, इनके लिए graph हम यूज कर रहे हैं, that is graph we are making, this one your graph pressure volume, किसके लिए, pressure volume graph we are making, this one your pressure and here will be volume. अभी हमने ग्राफ बताया था चारों प्रोसेस के लिए, उनमें से क्या था, आइसोबारिक के लिए था प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक के लिए क्या था, स्ट्रेट था वॉल्यूम कांस्टेंट, बट इन योर आइडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल देयर इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर वेरिंग देयर. ओके, सो कैसे वेरी कर रहे हैं, सो दिस वन स्लोप विल बी नेगेटिव, हियर बेटा दिस गामा इज एक्स्ट्रा इन योर आइसोथर्मल. क्लियर, तो इसकी गामा की जो वैल्यू होती है दैट इज वैल्यू इज मोर देन 1, इसकी वैल्यू क्या होती है, मोर देन 1, जिसकी वजह से क्या होता है, इट्स वैल्यू इज मोर देन 1, मोर नेगेटिव विल बी देयर. सो हियर वी कैन राइट देयर आइडियाबैटिक, सो आइडियाबैटिक कर्व इन पीवी डायग्राम will be more stiffer than isothermal.
isothermal, that is important point beta. ओके, दिस वन योर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कर्व जो आइडियाबैटिक की वो ज्यादा स्टिफर क्यों होती है, इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है मल्टीपल में गामा, गामा की वैल्यू क्या होती है, मोर देन 1 होती है, यहाँ क्या है 1 है, तो यहाँ मोर देन 1 है, तो इसलिए इसका ग्राफ कैसा आता है, दैट इज फॉर दी एक्सपेंशन प्रोसेस वी विल टेक दिस वन योर आइसोथर्मल कर्व, दिस वन योर आइसोथर्मल कर्व, okay, in this one direction, and this one your adiabatic curve, like this one, it will be more steeper adiabatic curve, this one your expansion graph. क्लियर कि इसका जो ग्राफ होता है वो ज्यादा स्टीफर होता है एज कंपेयर टू दिस वन, दैट्स व्हाई दिस वन योर ग्राफ विल बी सेम फॉर दियर compression PV graph will be like this one. PV graph we are making there, so it will be volume. Compression means volume will be decreased there. Volume क्या कर रहा है, decrease कर रहा है. So isothermal process will be like this one. Volume will be decreasing there, and adiabatic curve will be like this one. Adiabatic curve. आई होप यू अंडरस्टूड बेटा. स्टीफर का मतलब क्या होता है, खड़ा खड़ा सा कर्व होता है इसका, ओके, इसका ऐसा लेटा लेटा कर्व होता है आइसोथर्मल के अंदर. तो ये किसके लिए, कंप्रेशन के लिए. कंप्रेशन मींस वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इधर जाएंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. सो दिस वन इज अ ग्राफ फॉर योर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ फॉर बोथ करो योर आइडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कर्व. I hope you understood beta how we can find this one. First we have to take your equation. First for adiabatic we will take there PV equal to RT for 1 mole of the gas. Then here we are keeping there PV equal to R is constant, T is constant. That's why we are keeping both as a constant, K only, PV equal to K. Now we will take differentiation on both sides. So differentiation of constant will be equal to 0. Then here we will write there P dV V dP. After the differentiating, then the ratio of your change in pressure to the volume, then it will become minus P by V. And this one your slope of any graph will be changed along some your along y axis to the change along your y axis, x axis. तो y के along हमारा क्या प्रेशर है, x के along हमने क्या लेके चल रहे हैं, वॉल्यूम लेके चल रहे हैं, तो change along your y axis to the change along our x axis. So this one change will give us slope of this graph, that is equal to minus PV. Same like this one we will solve for your adiabatic change. Adiabatic के लिए हमने change किया तो इक्वेशन क्या होती है, PV गामा. We will take differentiation on both side of this equation. किया तो differentiation कैसे करते, पावर आगे आ जाएगी, 1 will be subtract from the power. This one rule, then we will solve, then find their slope of this one, change along your pressure to the volume, that is equal to minus gamma by pressure into volume. So we will use their ratio of both slope, then we will make their graph. Okay, I hope beta you understood this topic. Now thank you for watching today our class. Next class we will discuss our next topic.